x cube minus x minus 1 equal to 0 by using Euler method. To apply the Euler method, we need to find 3 points such that in the neighborhood of these 3 points are in the neighborhood of the required root. So here given, let f(x) is equal to given equation x cube minus x minus 1 is equal to 0. Then f0, well, we need to select 3 points. So take, in general we are considering 0, 1, 2 or 0, 1, minus 1, depend upon the question. So f0 is minus 1 and f1, this is 1 minus 1 minus 1, this is again minus 1, and f2, 2 cube minus 2 minus 1, that is 5. So you see here f0 into f1 is less than, not less than 0, sorry. So f1 into f2, f1 into f2 is less than 0 and the root is, and here f1 into f2 is equal to minus 5, so less than 0, and also mod of f1 is less than mod of f2. The root is near to 1 and therefore 1 root of f(x) lies in the interval 1, 2 and root is near to 1 and root is near to 1. Here mod of f1 less than mod of f2. Now there are 3 points. Root is near to 1. So you see 1 and 2 are close to each other, and similarly 1 and 0 are also close to each other. So root is near to 1, maybe root is greater than 1, surely. So we can say the root is, all the 3 points 0, 1 and 2 are in the neighborhood of the required root. So we can take these 3 points. So taking xi minus 2 is equal to 0 and xi minus 1 is equal to 1, xi is equal to 2. So then we have fxi minus 2, fxi minus 2. Actually this is denoted by I minus 2, fi minus 2. So this is equal to, क्या होगा, f0, f0 की वैल्यू -1. Similarly fi minus 1, this is f1, तो f1 की वैल्यू अगेन -1 and fi, this is f2, तो f2 की वैल्यू इज 5.
So we obtain the value of this, this and this. These are required in the Mueller method. And also we define H. H is equal to x minus xi. That is x minus 2. So here H is x minus 2. And hi by same as in formula. So here we will use xi minus 1. Xi we have taken 2 minus 1. That is 1. Hi. And then hi minus 1. Hi minus 1 is xi minus 1 minus xi minus 2. Xi minus 1 is 1, I minus 2 is 2. So minus 1. Hi minus 1. Then, no, one mistake, sorry. Actually xi minus 1 is 1 and xi minus 2 is taken as 0. तो ये हो गया 1 होगा प्लस 1 और यहाँ xi is 1 2 minus xi minus 1 ठीक है. And then we calculate lambda. Lambda is h upon hi. So we have calculated h. X minus 2 upon hi is 1. So this is x minus 2. And lambda I equal to hi upon hi minus 1. Hi calculated 1 upon I minus 1 is 1. So this is 1. Now we obtain the value of delta I. डेल्टा आई का जो फार्मूला था उसी से 1 प्लस लेमडा आई. तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2. डेल्टा आई हो गया. अब देन वी कैन कैलकुलेट जी आई बाई द फार्मूला जी आई एफ आई माइनस 2 लेमडा आई स्क्वायर माइनस एफ आई माइनस 1 delta I square plus AF I into lambda I plus delta I. this. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालिए कितना आएगा. तो here एफ आई माइनस 2 is taken as not taken calculated as minus 1. तो minus 1 into lambda I square यानी 1 minus एफ आई minus 1 minus 1 into delta I square यानी 4 plus एफ आई is 5 into lambda I 1 plus delta I 2 this. So finally it become minus 1 and plus 4. So plus 3 and 15. So 18. So the GI is 18 in this problem. The quadratic equation for 1 by lambda. और 1 by lambda is जो ऑलरेडी निकाले हैं. एक्चुअल में फार्मूला तो हम हमेशा नहीं डिराइव कर सकते. आपको फार्मूला याद रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो 1 by lambda स्क्वायर
1 by lambda quadratic equation is fi into delta I upon lambda square plus gi upon lambda plus lambda I into fi minus 2 lambda I minus fi minus 1 delta I plus fi this इक्वल टू 0। अब इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो ये fi इंटू डेल्टा आई इज fi इज हियर 5 और डेल्टा आई इज 2 तो 10 upon lambda square plus gi upon lambda gi is 18 plus lambda I is 1 into fi minus 2 is 0 no sorry xi minus 2 0 fi minus 2 0 नहीं है fi minus 2 is minus 1 so this is minus 1 minus 1 into lambda I is 1 and minus हेलो बोलिए कोई कुछ बोल रहा है हेलो क्या बोल रहे हैं here lambda I is 1 and then fi minus 2 is minus 1 into 1 minus fi minus 1 is again minus 1 so then minus 1 into delta I is 2 plus fi is 5 you see here 5 this equal to 0 तो ये हो गया 1 plus 2 ये minus 1 plus 2 तो 6 हो जाएगा तो ये हो गया 10 upon lambda square plus 18 upon lambda plus 6 इक्वल टू 0 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यानी दिस विल बी 5 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 अपॉन लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब रूट ऑफ दिस इक्वेशन तो 1 बाई लैम्डा इज माइनस बी माइनस 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 81 बी स्क्वायर minus 4 into 5 into 3 upon 2 into 5 and 10 so this is equal to minus 9 plus minus 21 under root upon 10 so now lambda is 10 upon minus 9 plus minus root 21. So here we take the sign either positive or negative such that the denominator become maximum in magnitude for lambda. और यहाँ लेंगे तो numerator become maximum in magnitude. So here taking negative sign. So taking negative sign. By taking negative sign
तो we have lambda is equal to 10 upon minus 9 minus root 21. अब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके आप निकालिए तो दिस विल बी माइनस 0.736236. This is the value of lambda. Then first approximation, an approximation to the root xi plus 1 is given by xi plus lambda hi. Substituting the value xi, we have taken 2 plus lambda minus 0.736236. This is lambda into hi. Hi is calculated here 1 into 1. तो ये फाइनली 2 में से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, देन इट विल बी xi plus 1. Actually this is first approximation. This is equal to 1.263764. So this is by using Mueller method. Suppose we want to find the value correct up to some decimal place, then we need to apply this method again. तो उसके लिए अगेन अप्लाई करने के क्या होगा, xi minus 2 will be 0, xi minus 1 will be 1 and xi will be 1.263764, the new value. Then again obtained xi plus 1. The second approximation, then third approximation. So in this method actually we are obtaining only first approximation to the root, लेकिन कर सकते हैं सेकेंड निकालेंगे फॉर सेकेंड स्टेप xi plus 1 third step. When we start the process of iteration, when the value of the root obtained in the ith step is equal to value of the root obtained in I plus 1th step, correct up to required number of decimal places. So this is the Mueller method. अब इसका फार्मूला थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको अगर ये याद रखते हैं कि ये फार्मूला क्या है, दिस फार्मूला, तो देन इट बिकम इजी. दीज नोटेशन आपको याद क्या रखना, दीज नोटेशन एंड ये तो नोटेशन इजी है, और दीज नोटेशन PHI, lambda, lambda I and जो है delta I and GI. Then the quadratic equation for 1 upon lambda, this you need to remember. Next method is method for complex root. अब दो मेथड बचे, एक मेथड फॉर कॉम्प्लेक्स रूट एंड वन क्वोशिएंट डिफरेंस मेथड. उसके बाद ऑल द मेथड विल बी फिनिश टू फाइंड द रूट, एंड वन क्लास वी नीड टू फाइंड द error of these method. Method for complex root. Suppose we have given fz is equal to 0. Here z is equal to u function of xy plus I v not z, sorry, fz is equal to fz. This implies fz equal to I v function of xy equal to 0. This is the given function. Z is the function of complex variable x plus iy.
problem is to find the root of this equation. So here again, if we can apply the Newton-Raphson method, zi plus 1 is equal to zi minus f z0 upon f dash z0. By using this method, we can determine the first, second, third, and so on approximation to the root. And here again, we stop the process of iteration when the root of हाँ हेलो क्या कर रहा है? क्या बोल रहे हो? अगर क्लास में बात करना है तो क्लास से लीव कर जाइए, या कुछ बात करना है तो बताइए क्या है। So here first we suppose कि z same as in case of real variable z0 is equal to x0 y0. Complex number is written in order pair. This means that like this x0 plus I y0. This is in real part, imaginary part and real part. So in general we can write in terms of order pair. So z0 x0 y0. So by taking initial approximation, we can determine f dash z0 from the given function, and then substituting the value. ये जीरो नहीं होगा सॉरी, यहाँ आई हमने लिया तो आई होगा, दिस आई स्टार्ट करने के लिए z0 लेंगे तो ये आपका z1 आएगा। z1 इज इक्वल टू z0 माइनस एफ z0 अपॉन एफ डैश z0. So by using this we obtain z1. z1 means z1 is x1 y1. This will be the root. So similarly we obtain z2 z3. z2 is equal to z0 minus f z1 upon f dash z1. So the second approximation. So when we stop the process of iteration, when same current value of the root is equal to the previous value of the root, करेक्ट अप टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ एक्स वाई दोनों आपको मर्ज करना होगा। तो दिस इज वन मेथड, one way to find. Another way is, in another way, मतलब in general for calculation we are using this method, but we can also determine the root by using another way like this. Here given fz is equal to 0, so this implies u xy, u function of xy plus I v function of xy equal to 0, real part and imaginary. This 0 means u xy is 0 and v xy is 0. This, so suppose initial approximation is x0 y0 xi yi, then improved approximation to the solution, and suppose the initial approximation is given by xi and yi. So then certainly here u xi and yi is not equal to 0, because this is not exact root. Certainly this is not true. So let be the initial approximation, then xi plus 1, then improved approximation to the root is
xi plus 1 is equal to xi plus error term, suppose h, and yi plus 1 is equal to yi plus k. So then we need to determine h and k. H and k are error term. Then certainly, if this is the exact value of root, so certainly it become uxi plus h and yi plus k is equal to 0. And similarly for b, axi plus h and yi plus k is equal to 0. Then by using Taylor series expansion in power of h and k, तो ये हो जाएगा this implies uxy uixi plus h ux means del u del x plus k uy, and higher order term आएगा 1 upon factorial h square uxx plus 2hk uxy and plus k square uyy and so on. This equal to 0. For this, similarly for other also. So you see here, actually h and k are small. The neglecting higher order term than a 1 in h and k, so all the term become 0. This becomes 0. This becomes this is equal to h ux plus k ui is equal to minus uxi and yi. This. So we obtain this equation. Similarly for b, we obtain h bx plus k by is equal to minus bxi yi. Here also ux is function of xi yi. Vy is function of xi yi. U also. So then solving these two equations for h and k. Solving these two equations for h and k, तो we obtain the value of h and k as h क्या आएगा? h will be minus, by Cramer rule we can obtain the u x I y I into v y x I y I minus v x I y I into u y x I y I divided by determinant d, where d क्या होगा? Coefficient, determinant of the coefficient. Here d is determinant ux uy vx vy. This is the value of d. Value of this is d. In similar way, this we obtained h. Similarly, we obtained k from these two equations. So k is given by minus ux xi yi into v xi yi minus u xi yi into v
xi yi अपॉन डी सेम होगा दोनों में। दिस इज बाई क्रैमर रूल। The above equation from above equation substituting the value of h and k, the xi plus 1 equal to xi plus h and yi plus 1 is equal to yi plus k। h और k यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, then we obtain the required improved value of the root। तो this is another way। दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि here no need of division of a one complex number by another complex number। लेकिन उसमें क्या आएगा, f dash f z0 upon f dash z0, that is division of a one complex number by another। तो वहां पर आपको टाइम लगेगा, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर वो चीज नहीं आएगा, यहाँ दोनों रियल हो गया। एंड आफ्टर डिटरमाइनिंग xi plus 1 yi plus 1 we obtain zi plus 1। तो zi plus 1 क्या होगा, दिस विल बी xi plus 1 plus I yi plus 1। this is the required root। so this is another, and here also you see h and k, here h and k both depend upon u and v and its partial derivative। तो b में change these two formula which depend upon u only and v only with the help of Cauchy-Riemann equation। Here CR equation, Cauchy-Riemann equation is ux is equal to vy and uy is equal to minus vx। this by using this relation we can change, suppose we want to write this relation in terms of u only, then this relation will be in terms of u को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से, तो v के टर्म में आ जाएगा, एंड vx को, तो then it will be easy but no need to change। ये कहाँ से आएगा, this is Cauchy-Riemann equation। if fz is an analytic function then the real and imaginary parts satisfy this equation in Cartesian coordinate। पोलर में अलग होगा, तो वो हम डिटेल नहीं बताने जा रहे हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या है, वो हम नहीं बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि या थोड़ा सा हम बता देते हैं कि एफ जेड इज फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड विद इन ऑन ए डोमेन डी एनी सेट। इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल at every point of the domain within on the domain except possibly at finite number of point, then fz is said to be analytic। मतलब उसका सिंपल सा है कि in the given domain D the function is differentiable, finite, single valued and differentiable except possibly at finite number of point, and there the function is analytic in the domain D bounded by any closed curve। then there may be some point at which the function is undefined and not differentiable, but function is said to be analytic, but these points are finite in number, and if the domain D has no exceptional point, these points are called singular point, then the function is called said to be regular in the domain। तो जो अगर मान लीजिए कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है, नो सिंगुलर पॉइंट, तो वो रेगुलर फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसके दोनों में आप जो चाहें यूज कर सकते हैं,
एडवांटेज क्या है, दूसरे में आपको फार्मूला याद करना है, पहले मेथड में फार्मूला नहीं याद करना है तो कैलकुलेशन ज्यादा करना है। दूसरे में थोड़ा कैलकुलेशन इजी है तो फार्मूला याद करना है। अब आपको जो इजी लगे, ठीक है। राइट वन क्वेश्चन। Find the complex root of the equation fz is equal to zq plus 1। एक और भी है, अगर मान लीजिए आप न्यूटन मेथड अप्लाई करेंगे तो सीधे इसी पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड अप्लाई करना है तो आपको इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना होगा, u and v, then you will apply। Correct to 8 decimal places by taking 0.25 as the initial approximation। Here initial approximation is given, तो ये हो गया x0 y0 या z0 आपका क्या होगा, z0 will be 0.25 plus I into 0.25, this is z, this z0। तो अब जो भी आप अप्लाई करिए z1 z2 z3 z4 आप निकालेंगे और ये देखेंगे कि x y अप्रॉक्सीमेटली 8 डिजिट तक मैच कर जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। दैट विल बी द रिक्वायर्ड रूट। तो दिस इज मेथड फॉर कॉम्प्लेक्स रूट। सॉल्व करिए, बेटर है ये कि न्यूटन लगाइए। z0 आपको हमने बता दिया और अब आप निकालिए z1। तो z1 विल बी z1 is equal to z0 minus f z0 upon f dash z0। तो f z0 क्या होगा, z0 is equal to z0 क्यूब प्लस 1, z0 ऊपर लिखा हुआ है, एंड f dash z0 3z0 स्क्वायर। Then substitute the value of z0 and put here। और डिवीजन आएगा तो क्या करेंगे, z0 माइनस जो भी आएगा डिवीजन तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये z1 आ गया, फिर z2 निकालेंगे, z3 निकालेंगे, तो 6-7 स्टेप के बाद आपका जो आएगा वैल्यू वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब लेंथी क्वेश्चन है। अब एक बचा है क्वेश्चन डिफरेंस मेथड, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। आएगा आंसर 0.500, 8 निकालना 3, 5, 6, 7, 8 एंड सेकेंड minus 0.86602540
ये आ जाएगा। अगर इसको जेड के टर्म में लिखेंगे तो प्लस आई से ये जुट जाएगा, यही है, ये एक्स है, ये वाई है, मतलब जेड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अभी टाइम अब हो गया है, अभी अब बंद कर रहे हैं। हेलो।